एफएससी करनी है, आईसीएस करनी है या प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग। एंड आई वाज लाइक हैं, चुप चुप कर वीडियो देख रहा है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। वॉच द वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड डू ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स। थैंक यू। Hey guys, it's me again, Armugan, and welcome to this YouTube channel. This is the episode 22, I believe. और कल से हमने तरीका वारदात थोड़ा सा चेंज कर दिया था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। और आज मैं चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बात करें। और ये प्रॉब्लम वाकई बहुत सीरियस है, मजाक की बात नहीं है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम। पर आज जैसे कि आपको पता है कि हम किसी चीज़ को सीरियस रहने नहीं देते, क्योंकि आई हैव अ फिलॉसफी इन लाइफ। I believe we get only one life, right? एक life, एक ज़िंदगी है, तो why not live every day with fun? Why not enjoy every day? I mean, हाँ, you know, you gotta be disciplined and do this and that, and you're gonna speak like that, and you gotta ऐसे करके आपको चलना है और बड़ा disciplined रहना है। पर you know, even when you're disciplined, you can have the fun, you can have the enjoyment. ये आपका faith है ना, इसमें आपने सारी चीज़ें यूज़ करनी है। आपने स्माइल भी करना है, आपने लॉफ भी करना है, आपने हंसना भी है, आपने सब कुछ करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस इस तरह बैठ जाए, ठीक है? तो इसीलिए जस्ट हैव फन, लाइक एंजॉय योर लाइफ। दिस इज़ द वेरी बेसिक थिंग और वेरी बेसिक फिलॉसफी, जिससे नॉट लाइक अ फिलॉसफी पर काइंड ऑफ लाइक अ फिलॉसफी। तो मैं इससे आई लिव माई लाइफ लाइक दिस एवरी सिंगल डे। खैर, दिस प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ विजन। मैं अक्सर अपने कॉलेज में, और कॉलेज में ये बात ज़्यादा थी, स्कूल में तो क्योंकि स्कूल में आप ज़्यादा देर रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, इस तरह के सवाल आप पूछते नहीं हैं। वैसे भी पूछते भी हैं तो कहते हैं क्या यार है ना, बस ठीक है। सवाल ये है कि हम पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनना है, बड़े होकर क्या बनना है, या इन अदर वर्ड्स की ज़िंदगी में क्या करना है, बड़े होकर क्या बनना है। वैसे ही बहुत ही फजूल क्वेश्चन है, डोंट एवर आस्क दैट, क्योंकि आई टेल यू। पर जब भी आप पूछते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना है, तो वो कहते हैं क्या करना है, मैट्रिक करना है, मैट्रिक करने के बाद जाएंगे कॉलेज में। अच्छा, फ़नी स्टोरी, जब मैं कॉलेज ज्वाइन करने लगा था ना, मैट्रिक के बाद कॉलेज ज्वाइन करने लगा था, तो मुझसे पूछा कि घर वालों ने पूछा, जाहिर सी बात है, माई डैड एंड माई मॉम दे आस्क्ड मी कि तुमने एफएससी करनी है या आई कॉम करनी है, या आई कॉम का तो वैसे मुझे चॉइस नहीं थी, एफएससी करनी है, आईसीएस करनी है, या प्री मेडिकल, एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग। एंड आई वाज लाइक हैं, ये क्या होता है? आई ऑनेस्टली आई डिडंट नो। अभी भी कॉलेज में अक्सर लड़के बोलते हैं लाइक एनईटी, नेशनल एंट्री टेस्ट, ओके, ये मुझे नहीं पता था कल कुछ डेज पहले तक मुझे नहीं पता था, जब तक इसकी क्लासेज नहीं स्टार्ट हुई। और भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, आई कॉम, बी कॉम और बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी, ऑल दीज 3 लेटर्स एब्रीविएशन या 4 लेटर्स जो हमारा दिमाग ख़राब करती हैं। और जैसे जब कॉलेज में एंटर हुआ ना, तो ज़रा देखा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, वो ज़रा दे आर लाइक लिटिल बिट मोर फ्यूचर ओरिएंटेड, दे आर मोर केयरफुल अबाउट देयर फ्यूचर, कि उन्होंने क्या करना है फ्यूचर में, उन्होंने क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। और जब मैं उनसे पूछता भी था, मैं इस बात पर काफ़ी एक्साइटेड हुआ, मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। पर जब मैं उनसे पूछता था तो उनका जवाब होता था कि मैंने फ़लानी यूनिवर्सिटी में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है या फ़लानी इंजीनियरिंग करनी है। क्योंकि देखो, इस सिस्टम में ना इतनी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया, एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, आई कॉम, आईसीएस, 4 चॉइसेस। हाउ इन द हेल कैन दे जस्ट स्क्वीज एवरीथिंग इनटू 4 थिंग्स? ये मार्केट प्लेस है, दिस इज़ द, और ये दिस इज़ इवन नॉट द रियल मार्केट प्लेस, दिस इज़ द मार्केट प्लेस ऑफ, आई डोंट नो, ऑफ स्कूल्स, ऑफ सिस्टम्स, ऑफ एवरीथिंग, ऑफ समथिंग लाइक दैट। आई डोंट रियली आई एम क्लियर अबाउट दिस स्टफ, क्योंकि मैं ये सोचता नहीं अपनी लाइफ को। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी उससे नहीं सोचा कि मैंने एफएससी करनी है, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में जाना है, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्योंकि आई बिलीव कि यू डोंट नीड डिग्रीज इन द 21st सेंचुरी, यू डोंट नीड इट नाउ। और आप एप्पल को देख लें, IBM को देख लें, और इस तरह की बड़ी कंपनीज़ को देख लें, दे नीड स्किल इंस्टेड ऑफ हैविंग अ पेपर, राइट? दे नीड स्किल मच मोर। हाँ, पाकिस्तान में जो जॉब करनी है उनके लिए तो डिग्री चाहिए, बट आई स्टिल बिलीव इफ़ यू हैव अ स्किल एंड यू हैव दिस फोन जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, और जिस भी डिवाइस पे आप मुझे देख रहे हैं, इफ़ यू हैव दिस एंड इफ़ यू हैव द स्किल एंड द राइट माइंडसेट, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द 21st सेंचुरी, आई बिलीव दैट। तो अक्सर मैं इन लोगों से पूछता था, और इनका विजन बड़ा कोई
क्रैपी सा और लाउजी सा, सॉरी टू से, ऐसा ही विजन होता था कि हमने ये कर लेना है और ये कर लेना है. I'm like, no, tell me, who do you want to become? Who do you want to be? Who you are? What's your passion? What gets you excited? Tell me about that kind of stuff. And they didn't know. उन्हें पता ही नहीं था. What gets them excited? What gets them alive? They didn't have a meaning in their life. They didn't have a clear vision in their life. और हम में से अक्सर, and if you're seeing me, you're a student, or even if you're not a student, even the people who work a 9 to 5 job, उनका vision होता है that someday in the future, someday we'll have this, someday when I get retired, someday when I get graduated, someday when I get this, someday when I get that. Someday never comes. Someday, get yourself rid of the theory of someday. एक बहुत ही अच्छी saying है, इसका मतलब और वो saying ये है कि the road of someday leads to a town of nowhere. Right? Someday is not a thing. Someday is not a choice. और अक्सर ये लोग, these are the kind of people, to be honest, these are kind of people who are really disturbed from their day-to-day life. So they are disturbed. They have kind of like disturbed, but they find a little bit pleasure inside of it कि थोड़ी वो थोड़ा enjoy भी कर लेते हैं, मतलब क्लास की ब्रेक्स में थोड़ा सा वो enjoy भी कर लेते हैं, but they are really disturbed. They are not really happy. And if you ask them, if they respond honestly, I assure you, you'll find this. You find that there's no happiness. And one of the reasons is because they don't have a vision. They don't have a clear vision for what they want. और अक्सर जब आप high performers की, the leaders, the movers and shakers of the world, if you ask them, if you analyze them, तो उनके behavior में एक चीज़ ये है that they had a clear vision for what they want, who they wanted to become, and they shaped themselves in their identity, and they broke down their vision into day-to-day, week-to-week plans, and they followed through. That's how life happens. Right? हमें तो स्कूल में कहा जाता है या कॉलेज में कहा जाता है, work hard, do this, do that. I mean, it's okay, word-wise ठीक है, but is it adequate? Is it enough? Okay, work hard on what? There are people who work hard and they're burned out. Be passionate about what? Right? All of these things. So this advice is not adequate. First step, hands down, is you need to have a vision. And if you don't have a vision, create one. And the way to create a vision is by going out and trying new stuff. The way to create a vision is by self-awareness. क्योंकि जब आपको अपना पता होगा that what do I want, who do I want to become, what's my passion, what gets me excited, what clicks the needle inside, what moves the needle inside of me, what's the flame that's burning inside of me, what's the meaning, what am I here to contribute to this life, contribute to this world. Then you will create a vision that excites you, or ऐसा vision which compels you. Willpower doesn't last. हम कहते हैं we need motivation. We don't need a motivation. You need a vision that compels you every single day. If you have a strong enough meaning, a strong enough reason, you'll follow through. And a vision is so powerful, I can go on and on. एक स्टडी हुई थी 1953 येल यूनिवर्सिटी. उसमें ये स्टडी ये हुई थी कि ग्रेजुएट्स उनमें से सिर्फ less than 3% had written goals, i.e. they had a meaning, they had a vision. और जब 10 years बाद और 97% और the less than 3% जिनके written goals थे उनको compare किया गया उनकी लाइफ में, तो जो less than 3% थे, they reported being more happy, they reported being more well, more healthy, and they just enjoyed life. But obviously this is not the right kind of metric to measure it, right? But here's the kicker, here's the major difference. वो जो 3% थे ना, 3%, वो the rest of 97% combined, उन सबसे ज़्यादा worth थे financially. They were all worth more than the rest of 97% combined financially. You know how insane that is? Just because they had a vision that they knew they had to move forward. मैंने पहले भी किसी वीडियो में अपनी ये कहा है, your brain is like a missile. It's like a modern missile. पहले के missiles थे, if you
if you give them a target, let's say this is the target, और वो जा रहे हैं target को hit करने, and the target moves, they'll miss it. But the modern missiles, if the target moves, the missile will move with it and it will go to that target. Same as your brain. The target is your vision, and if your vision moves, even if you have to take ups and down paths, I mean, अगर आपको ऊपर नीचे, right, left, whatever path you need to take. And life is not a straight line, by the way. Life is not a straight line. अगर आप नेचर में भी जाते हैं तो आपको कहीं पे स्ट्रेट लाइन नहीं नज़र आएगी, और अगर आपको नज़र आती है तो वो किसी इंसान ने बनाई है, वो नेचुरली उधर नहीं थी. लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. लाइफ इज़ अप्स एंड डाउन्स. बट वन थिंग इज, इफ़ यू हैव अ विजन, you'll have ups and downs, पर long term में you'll always go up. That's the power of having a vision. Your mind is a really powerful device if you learn to use it, obviously. और हम में से स्टूडेंट्स का अक्सर का विजन क्यों नहीं होता, कुछ लोग. Now the question that comes to mind is कि अगर एक विजन क्रिएट करना इतना पावरफुल है, इतना एक्साइटिंग है, इतना इफेक्टिव है लाइफ में, so why don't students create a vision? उनके पास खुद से ये विजन क्यों नहीं है लाइफ के लिए? द रीज़न इज़ बिकॉज एक तो उन्हें सिखाया नहीं गया था कि एक विजन इतना पावरफुल है, इतना इफेक्टिव चीज़ है. द सेकेंड रीज़न बीइंग they do have a vision, but they are afraid. They are afraid of the judgment. They are afraid of the uncertainty in their vision. I mean, isn't there somebody in the class जिसका कॉलेज के अलावा या स्कूल के अलावा उसकी सिंगिंग अच्छी होती है, या उसकी ड्राइंग्स अच्छी होती हैं, या उसकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, just fantastic. So they know that's their passion, that's what makes them excited, right? But they do not follow through just because उनके पेरेंट्स ने उन्हें कंडीशन किया होता है कि follow the system in order to have a happy life. Follow the system. And let me tell you something, the system is not built to give you a happy life. It's not even built to give you the least of that. It's just built, the system is built on the model of industrial age. It's built to produce workers. It will make you a worker. And you can see that इतने सारे लोग graduate करते हैं and still they are jobless. इतने सारे engineers, इतने सारे everything, इतने सारे, I mean, I have seen this over and over again कि 71% of the people who graduate from university, they don't get a job in the field which they study in the university. ये मैंने स्टडी पहले भी बताई थी अपनी किसी वीडियो में कि 71% लोग अगर उस फील्ड में जॉब ही नहीं लेते तो then what's the point? हमें एक ये डर होता है कि अगर हमने अपने विजन को फॉलो करने लगे और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे तो हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, और पेरेंट्स को ये डर होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी. तो दिस इज़ लाइक अ लूप that runs, and the only way to break the loop is get rid of the fear of judgment. Get rid of the fear of judgment and start living for yourself, because again, you get only one life, and live it for yourself or for others. And by the way, I don't say कि अपने parents की बात को बिल्कुल ही टाल दें या stop loving them. I'm not saying this. And love them the best, but उसकी एक जो बात है, this is a cut, इसके बाद love them the best, पर उसके मतलब ये नहीं है कि sacrifice your own happiness. Sacrificing your own happiness long term उनकी short term happiness के लिए. क्योंकि let me tell you something, 10 years from now अगर आपके parents आपको खुश देखेंगे, अगर आपके parents आपको देखेंगे that you are doing very well in whatever the vision you have, and you are living that vision, and you are happy, you are excited, and not just that, you are fulfilled, because success without fulfillment is the ultimate failure. Tony Robbins says that. You are not only successful, but you are only fulfilled, you are happy, and you are just enjoying life. तब वो आपको देख के खुश होंगे या नहीं? I believe yes. तो हम उनकी शॉर्ट टर्म खुशी के लिए अपनी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस छोड़ देते हैं. अक्सर लोग ऐसे करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द जजमेंट दे विल गेट फ्रॉम अदर पीपल. क्या है, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, फ्लोर पे बैठा हुआ यूट्यूब वीडियो बना रहा है, और क्या एडवाइस दे रहा है? एडवाइस, मैंने उससे एडवाइस दी थी, इतनी अच्छी एडवाइस तो नहीं थी उसकी. ये जस्ट
this fear of judgment, ये हमारे अंदर रहता है. We need to break free. We need to break free. And when I started out, इतने सारे मेरे friends, they're like, what the hell you're doing? Are you crazy? Stop dreaming and all of this. But sometimes you also need to let go of old things that are pulling you down to go forwards. Don't let go of your friends. Keep loving them, but don't let them pull you down. Have a vision. Get excited. Get alive. और मैं इस वीडियो को सिर्फ एक बात शेयर करूँगा. One quote that I love, and that's from my mentor Tony Robbins again. You see, 10 years from now will surely arrive. 10 साल आज से हम कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे. But the question is, where? कहाँ पहुँचेंगे? That's it for today's video. I'll see you in the next one tomorrow. And till then, bye-bye. And don't forget to subscribe wherever you see the button. And that's me. See you.